नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 17 फरवरी 2023 शुक्रवार है। सुबह के 7:30 हुए हैं। हम आज के निफ्टी के बाज़ार के रुख का वीडियो और अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल शाम को चूँकि अमेरिकी बाज़ार में बहुत ऊंच नीच हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज सुबह ही बात करें। अमेरिका में S&P 500 काफ़ी नीचे बंद हुआ, लगभग 1.34% नीचे, यानी 57 पॉइंट्स नीचे। तो आज जब बाज़ार खुलेगा तो हमारे यहाँ माहौल सुस्ती का है, और वो माहौल हमने कल ही देख लिया था जब बाज़ार सुबह सुबह ऊपर जाके बाकी सारे दिन नीचे आता रहा। हमारे यहाँ निफ्टी चार्ट क्या कहते हैं? ये चार्ट मल्टी चार्ट्स की तरफ से, इसके सौजन्य से है। ये डेली एंड ऑफ डे डेटा है, कैंडलस्टिक्स चार्ट है। इसमें एक ज़ीरो लैग मूविंग एवरेज लगा हुआ है, और इसमें मैंने आज कुछ लगाया नहीं है। ये हमारा ट्रेडिंग रेंज था। इस ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट जब हुआ तो इसका एक टारगेट बनता है, जितनी इसकी चौड़ाई है उतना ही ये उसका टारगेट था। कल देखिए आप, ये इस टारगेट को बिल्कुल छू कर यहाँ कुछ देर तक थमा भी रहा बाज़ार। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग रेंज के टारगेट हर बार सही साबित होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, या कोई गारंटी है वो भी नहीं है। पर अनेकों बार ट्रेडिंग रेंजेस के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टारगेट पूरे हो जाते हैं, तो हम उस पर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये बाज़ार रुका कहाँ? 18,140, आप ये समझ लीजिए 18,140 अहम स्तर था। यहाँ पर आके बाज़ार इसको रेजिस्टेंस मिला था। उसके पहले ये इन्हीं स्तरों के आसपास ये 4-5 दिन घूमा था। बहुत पहले ये देखिए नवंबर में ये बिल्कुल इसी स्तर से सपोर्ट लेकर भागा था। तो ये एक सिग्निफिकेंट लेवल भी था जहां बाज़ार रुक गया और कल नीचे भी आया है। रुख क्या बनता है? रुख ये बनता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हमारे एवरेज ऊपर जा रहे हैं, बाज़ार हायर लोज बना रहा है। एक ट्रेडिंग रेंज का टारगेट उसने अपना ऊपर की तरफ पूरा कर लिया है। बाज़ार ऐसी जगह रुका है जहां उसका रुकना स्वाभाविक था। तो मेरी समझ में अभी तक ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। होगा या मुझे समझ आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ उसको साझा करूंगा। पर अभी यही है कि बाज़ार का ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। जब कोई मौका पड़े तो इसको ख़रीदना चाहिए। आज वो मौका कब पड़ेगा या नहीं, या सोमवार तक रुकना चाहिए, ये आपको इंट्राडे की प्राइस एक्शन से समझना होगा। हो सकता है सोमवार तक रुके तो शायद ठीक रहे, तब तक बाज़ार के रुख का और खुलासा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, good morning. I am Sudarshan Sukhani, and today is 17 February 2023, Friday morning, 7:30 a.m. This video is being made in the morning for a Nifty view for today and for the next few days. The main reason why this video was not made in the evening was that US markets were fairly choppy and uncertain in the evening. So I thought it is better to have a clear view of how world markets are behaving. Now let's look at the Nifty first. This is a daily chart for the Nifty with candlesticks on it and a low lag moving average which depicts the trend. This chart is from multi-charts and it's courtesy of the multi-chart software. The low lag moving average is rising, so the trend is up. This was a trading range. We have identified this trading range many times in the video, and then when it broke out, I suggested that the breakout is to be bought into. The level at which we wanted to buy was 17,900, and it was identified before the breakout. Now 17,900 and this is 17,700. So there was a 200 point width of the trading range, and that is a possible target. So that's 18,100, and this is the target. This is a clone of the trading range on the upside. This was the target. Yesterday the market opened and touched this target and stayed here comfortably for a long time. So the trading range met its theoretical target. Now targets are just numbers. They are mainly designed for us. They are not actually market oriented mechanisms, in the sense the market doesn't have to listen to it, and usually the market has its own mind. It is for our own risk and money management that we use targets. In any case, this target was touched and the market then retreated from this level. Now let's look at what actually happened. Why 18,140, where the market roughly touched the highs, was significant? Look at the left side. This is the zone at which the markets consolidated for a long time. Again, this line acted as a magnet
And again on the left side in November, late November, a correction stopped almost at this line. So this 18,140, 150 zone is now significant. It is fair to expect the markets to stop here as they have done earlier. What is the trend? The trend has not changed. See, we are having higher lows. The moving average is up. A trading range breakout on the upside met its target. So far there is nothing. And very natural resistance was expected which came in. So far there is nothing to change in the trend. Maybe today is not a good day to buy. That's a different issue. You have to work it out. But I would still be a buyer, not a seller. Not until a clear view is available. Thank you for watching this video. Please give your comments, and please note that there is some bot that is creating spam in the comment section. I do not ask you to call any number and for any kind of advisory. That is an automated spam that's happening. I have reported it. Let's see what happens. Thank you for watching again. Jai Hind.